આવ્યો હોય ત્યારે તો આ બધા જીવોને પણ ભગવાન શિવ પ્રત્યે આ જીવને અનુરાગ પેદા થાય અને ક્યારે ને ક્યારેક આ જીવ શિવ પદને પામે એ બહુ જરૂરી છે। એટલા માટે જ જેવી રીતે બિંદુકને પકડીને બાંધી દીધો અને પછી એને કથા સાંભળી એમ परम पूज्य गुरुदेव पण आपने एम कहे छे के आपणे पण आपणा मनने बराबर बांधी देवानुं के गमे ते थाय पण आ 5 दिवस आपणा कथा माटे ज होवा जोईए। घणा तो आ बेनोने पाछा कीधुं होय ने एटले चालो आजे मोढुं बतावी आवीए पछी कालथी जय श्री कृष्ण एवुं ना करता। हाँ आ भाई बहु कही गया छे एटले मारे जवुं पड़शे एटले घणा बधा आव्या मेहमानोने कहूं छुं। हाँ हवे समजी गया आ मेहमानो बधा बैठा छे ने एमने कहूं छुं के एवुं न विचारता के आ तो व्यवहार सचवाई गयो आजे जई आव्या कालथी चिंता ना खरी ने ना क्या बोलो छो एटले काले फरजियात बधाए बोलो। हाँ त्यारे कहेवाय के बराबर नातो निभाव्यो छे। कोनी साथे निभाव्यो? शुं अमारा अरुणभाई साथे, मलपतभाई साथे, ज्योतिबेन साथे, हिनाबेन साथे के अमारा दादा साथे? ना, आ नातो पाको करवानो छे। कोनो? आ जीवनो, आ शिव साथे नातो पाको करवानो छे। एटले बैठक करीए छीए। एमने एम नातो पाको न थाय, बे चार मीटिंग लेवी पड़े, बे चार बैठक थाय पछी नातो पाको थाय। एम आपणे पण 5 दिवस आ नातो बराबर पाको करी लेवानो छे। है ने जीवना शिव साथे अंतिम समय आपड़ा मिलन थई जवा जोईए। शिवत्वने हृदयंगम करी लेवा जोईए त्यारे आपणी कथा सार्थक थई शके। परम पूज्य गुरुदेव आपने वारे वारे समझावे के बेटा शिव जीवने पामी ले त्यारे तेने पूर्ण शांति अने विश्रांति मळे छे। आ बिंदु मने कमने मारी ने झपटी ने बांधी ने बेसाड्यो एने शिव कथा सांभળી અને કહેવાયું છે કે शिव कथा सांभળતા सांभળતા બિંદુકના અંતઃકરણની અંદર એવો દૈવી ભાવ પ્રગટ થયો અને પછી તો બિંદુક હવે પછી એને કાઈ સૂઝતું નથી। अंतःकरणना भावथी बिंदुक वारे ने घड़िए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नो जप करतो अने घणी वखते फरता फरता भगवान भोलानाथ ने हृदय थी याद करी अने अंतरना भाव ने व्यक्त करतो अने कहतो हे भोलानाथ आप मारी अर्जी ने जो नहीं सांभळो तो तमारा सिवाय मारी अर्जी बीजू सांभळशे कोण? पण कोण? आप ज एक अनाथना नाथ छो। याद राखजो कि भगवान नी पासे बेसीए ने त्यारे आपणे कोई चौपड़ी लईने बैठा छे एमां जे स्तुति छे बोलीए छे बराबर छे पण मनथी आपणा हृदयमांथी जे काई निकळे अंदरथी ए प्रार्थना खास करजो। भले गाड़ी गेली हशे पण भगवान ने काली गेली भाषामां आपणा भीतरमांथी निकळतो अवाज छे ने ए सांभळવાનો खूब गमे छे। एने सांभळવાનો खूब गमे छे अने तेथी ज प्रभु परमात्माना परम सानिध्य शिवत्वने पामवा माटे आ बिंदुक वारे घड़िए प्रभुने हृदयथी प्रार्थना करतो जतो। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि युग द्रष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अखिल विश्व गायत्री परिवारना प्रणेता प्रवर्तक एवा गुरुदेव ए स्वयं साक्षात महाकाल प्रज्ञा अवतार छे। अंतःकरणमां तेमने पण एक ज हृदयमां भावना हती कि संसारना तमाम जीवो शिवत्वने पामे अने तेथी ज परम पूज्य गुरुदेव पण बारे घड़िए मानव हृदय सुधी सहज तेओ एम कहेता कि बेटा जीवनमां भगवाने आपने ज्यारे मानव जन्म आप्यो होय त्यारे मानवताने शोभे तेवा पवित्र कर्म करी पशुताना जे गुणो भीतरमां भरेला छे तेने तमे धीमे धीमे धोता रहो। केवी रीते साफ करी शकाय, केवी रीते पशुताने दूर करी शकाय चिंतन करजो थोड़ो। जाने अजाने पण आपणी अंदर ज केटली बधी पशुताना खोटा अवगुणो भरायेला छे। घणी वखते उग्रतावश આપણે કોઈને કાઈ અપશબ્દમાં પણ કહી દઈએ છીએ
હે ને, કે તું તો આના જેવો છે, તું તો આના જેવો છે, કેમ બોલાઈ જાય છે? અંદરની પશુતા છલકી ઉઠે છે, અને અંદરની પશુતા છલકી ઉઠવાને કારણે એ પશુતા અંદર છે એ સાબિત કરે છે, તો એ પશુતાને દૂર કરવી અને શુભ લક્ષણોને જગાડવા, શુભ તત્વોને જગાડવા, એનું નામ જ છે શિવત્વને દેવત્વના રૂપમાં ભીતરમાંથી પ્રગટાવવું. જ્યારે જ્યારે પણ સંસારી જીવ આ શિવત્વને પ્રગટાવી દે છે, ત્યારે ત્યારે તેના અંતઃકરણમાં અવશ્ય પરમ સુખ અને પરમ શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે. જેમ બિંદુકને પણ શિવપદ પ્રાપ્ત થયું શિવ કથા શ્રવણ કરવાથી. ચુંચુલાને તો જ્યોતિ સ્વરૂપ માં ભગવતી સતીના સખી બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આપના સૌના જીવનને પણ એવું પરમ સૌભાગ્ય મળે એ બહુ જરૂરી છે. પરંતુ સંતો સાધુ મહાપુરુષો કહે છે કે એના માટે વ્યક્તિએ અવશ્ય પોતાની જાતને ઉપર ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અધમ અને પાપી દુરાચારી વ્યક્તિઓના ચરિત્રોનું ચિંતન કરાવતા કરાવતા શિવ કથાના ફલશ્રુતિને આપણને યાદ કરાવી, અને કોઈએ એવું નથી વિચારવાનું કે આપણે જેવું કરીએ છીએ એવું કરીશું તો ચાલશે નહીં. મહાપુરુષોએ આપણને અત્યંત હૃદયસ્પર્શી મર્મજ્ઞને યાદ કરાવતા કહ્યું કે સંસારમાં દૂધ એ સૌથી સારામાં સારો પૌષ્ટિક આહાર કહેવાયો છે. દૂધ કેવું છે? સફેદ છે. દૂધમાંથી દહીં બને, એ પણ કેવું છે? સફેદ છે. દહીંમાંથી માખણ બને, માખણ પણ કેવું છે? સફેદ છે. એમાંથી ઘી બને, એ પણ કેવું છે? સફેદ છે. બધી બનાવટ દૂધની જ છે, પણ બધાયના ભાવ જુદા જુદા છે. 50 રૂપિયે લીટર દૂધ મળે તો 50 રૂપિયે કિલો ઘી ન મળે. હે, બધાના ભાવ અલગ અલગ છે. દૂધ સફેદ, દહીં સફેદ, બધું સફેદ ખરું, પરંતુ ભાવ અલગ અલગ છે. આ અલગ અલગ ભાવ કેમ થયા? અલગ અલગ ભાવ કેમ થયા? યાદ રાખજો, દૂધને ગરમ કરીને જમાવવું પડે છે, ત્યારે તે દહીં બને છે. દૂધને ગરમ કરીને જમાવવું પડે છે, ત્યારે તે દહીં બને છે. બરાબર ને? જમાવવા માટે એને કેટલા કલાક રાખવું પડે? 7-8 કલાક રાખવું પડે કે નહીં? એક જ જગ્યાએ 7-8 કલાક બેસી રહેવાની ક્ષમતા જેની વધી જાય એનો ભાવ વધવા. યાદ રાખજો, એક જ જગ્યાએ 7-8 કલાક બેસવાની ક્ષમતા વધે તો પછી ભાવ વધે. તમે ખાલી અહીંયા રોડથી બહાર નીકળીને જાઓ અને કોઈ એક વ્યક્તિને બેઠેલો જોયો, તમે 2 કલાક પછી જાઓ તો પણ એને જોવો, 6-7 કલાક પછી જાઓ પછી પણ તમે એને જોવો, બીજા દિવસે પણ એને જોવો, ચોથા દિવસે જોવો, 8મા દિવસે જોવો, તો પછી તમે કાંઈ નક્કી કરવા માંડો. તમે કાંઈ નક્કી કરવા માંડો કે આ કોઈ વ્યક્તિ ધૂની ધખાવીને બેઠો છે, અને પછી અઠવાડિયા પછી ન ધારો કે ન ઈચ્છો તો પણ લોકો એની પાસે જઈ અને 2 હાથ જોડીને પગે. આપણને કોઈ લાગે છે? કોઈ ના લાગે. ન બેસી શકીએ, ન હરખા રહી શકીએ, કેમ લાગે પગે? પણ એને લાગે કેમ? આ બેસવાનો ગુણધર્મ એને નિભાવ્યો, એમાં એનું આ ફળ. દહીં ત્યારે બને કે જ્યારે 6-7-8 કલાક એક જગ્યાએ સ્થિર થયું છે ત્યારે એ દહીં બન્યું. અને દહીંમાંથી માખણ ત્યારે બને. હે, કેટલું એને ઘમર 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 વલોવાય, કેટલું એને આમથી આમને, આમથી આમ, આમથી આમને, આમથી આમ કેટલું ફેરવે, કેટલું મંથન થાય, અને મંથનાદી ક્રિયા પૂરી થાય ત્યાર પછી તેમાંથી શું નીકળે?
આટલું બધું મંથન થાય ને પછી એમાં જે સાર તત્વ છે ને, માખણ મૂલ્યવાન છે પણ ઉપર આવી જાય, છાસની ઉપર આવી જાય, નીચે નથી જતું. ભારે છે માખણ છતાં પણ માખણ ક્યાં છે? ઉપર છે. છાસની ઉપર માખણ તરે છે, હે એનું મૂલ્ય છે. મૂલ્યવાન જેમ વ્યક્તિ મૂલ્યવાન બનતી જાય તેમ એ હલકી ઉપર તરતી થઈ જાય. એ ભારેખમ થઈ જાય ને એ મૂલ્યવાન ન હોય. યાદ રાખજો, શરીરથી નહીં, સ્વભાવથી. શરીરથી તો આજે ઘણા બધા ભારે હોય. અમારા ધવલભાઈ જોયા છે, પણ એ તો છે એવા હો પાછા, માખણ જેવા છે. એ માખણની મૂલ્યતા વધે છે જેને મંથનાદી કરીને મેળવ્યું છે. એમ વ્યક્તિના ભીતરની અંદર પણ સદગુણો જ્યારે જ્યારે જાગવા માંડે છે, એના ભીતરની અંદર ધર્મ ભાવના, લાગણી ભાવના, શ્રેષ્ઠ સંસ્કારો જ્યારે જાગે છે ત્યારે તે માખણ જેવો બને છે. કિંમત વ્યક્તિની નથી, કિંમત વ્યક્તિની નથી, કિંમત તેની અંદર રહેલા સંસ્કારોની છે. કારણ કે મંથનાદી એટલે કે ચારે બાજુ અથડાઈ કુટાઈને પણ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના સંસ્કારોને પકડી રાખે છે ત્યારે એ વ્યક્તિનું મૂલ્ય વધી જાય છે. અને એ માખણ જ્યારે પછી તપાવવામાં આવે, એ માખણ જ્યારે તપાવવામાં આવે ત્યારે એમ કહેવાયું છે કે એમાંથી ઘી તૈયાર થાય. માખણ તપે ત્યારે એમાંથી ઘી તૈયાર થાય. કહેવાય છે કે જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના નહીં બીજાના દુઃખોને જોઈ અને પોતે દ્રવિત થઈ જાય, પોતે કઈ કરી નાખવા તૈયાર થઈ જાય, પોતે કઈ આપી દેવા તૈયાર થઈ જાય, પોતાના ભીતરની અંદર સંસ્કારો જાગૃત થઈ જાય, ત્યારે કહેવાય કે વ્યક્તિ ઘી જેવો બની જાય અને ત્યારે તેનું મૂલ્ય સૌથી વધારે થઈ જાય છે. કહેવાય કે એવો જ્યારે વ્યક્તિ બની જાય ત્યારે તે શિવ પદને પામી શકે છે. આપણા જીવનમાં પણ એવા જ દેવી ભાવો, એવા જ દિવ્ય સંસ્કારો, એવા જ પરમ તત્વો જ્યારે જાગે ત્યારે માનવ માનવ મટી મહામાનવ બને, માનવ માનવ મટી દેવ માનવ બને, માનવ માનવ મટી અને તે જીવમાંથી શિવ તરફ પ્રયાણ કરે. એ માનવ અનન્ય મૂલ્યોને પામી અને આગળ વધી શકે. આવો એવા જ મહામાનવ દેવ માનવ કહી શકાય એવા શિવ શંભુ મહાકાલની શક્તિઓને લઈ અને આજે ત્રિપાઠીજી જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છે ત્યારે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી, અંતઃકરણના ભાવથી તેમનું અભિવાદન કરીએ કે આ સમય કોઈ સામાન્ય નથી. આ જ સમયની અંદર પ્રભુ આપણા જીવનને ખૂબ ઉપર ઉઠાવે. આવા દેવાત્માઓના દર્શન આપણા જીવનને ધન્ય બનાવે. આવો ગુરુદેવની એક કૃપા શક્તિ, મહાકાલની એક શક્તિને લઈ અને અમારા પરમ આદરણીય પૂજનીય એવા ત્રિપાઠીજી ભાઈ સાહેબ અહીંયા આવ્યા છે ત્યારે ખૂબ ખૂબ હૃદયથી તેમનું અભિવાદન, स्वागत सत्कार करिए. शांति कुंज से हमारे कई भाई लोग भी आए हैं और हमारे हटम्बा गायत्री शक्तिपीठ से गिरीश भाई और गुजरात से पूरे युवा संगठन का प्रभारी हमारे और उप जोनल बड़ौदा के संचालक हमारे महेंद्र भाई पधारे. सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिवादन और स्वागत करते हैं. भगवान सदाशिव शिव शंभु भोलेनाथ महाकाल हमारे जीवन में आए हैं, पधारे हैं. शिव यानी कल्याण, असीम को दूर करने वाला कल्याणकारी परम तत्व भगवान सदाशिव भोलेनाथ परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि युग दृष्टा, गायत्री परिवार के प्रणेता प्रवर्तक, महाकाल स्वरूप प्रज्ञा अवतार, जिन्होंने आज हम सभी को इकट्ठे करके उनके हृदय से एक अमृत बोध दिया है. रे मानव, अगर शिवत्व को प्राप्त करना है तो भगवान शिव की शरण में जा.
भगवान शिव के पास जो भी पशु हैं, सर्प, बिच्छू, कछुआ, हमें यही तो बोध देता है। अपने जीवन में भी सर्पाकार की तरह रहने वाली वही कुंडलिनी महाशक्ति को हम भीतर से जागृत कर सकते हैं, तो अवश्य हम शिव और शक्ति का मिलन अपने ही भीतर में पा सकते हैं। कछुआ की तरह अगर हम अपने जीवन में संयमितता को रखेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जीने वाला अगर कोई प्राणी है तो वो कछुआ है, क्योंकि वो संयम से जीता है। हमारे अंतःकरण में भी वैसी ही दिव्य विशेषता जागृत हो। शिव भगवान शिव के साथ बैठकर हम आज यही प्रार्थना करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के साथ चलने वाले युग सेनानी आज अखिल विश्व में चारों ओर फैले हुए हमारे गायत्री परिवार के परिजन भी, चाहे माने या न माने, और कोई माने या न माने, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इन सभी अपने बालकों को उपासना, साधना और आराधना के माध्यम से शिवत्व प्रदान करने के लिए शिव रूप बन के उन पर उन्होंने अपनी बहुत हृदय से करुणा बरसाई है। हमारे गुरुदेव के भीतर में जो करुणा थी, जो शिव के भीतर में रहती थी, शिवत्व की भांति अपने गुरु को अगर हमने जाना है, समझा है, तब तक ऐसा अवश्य हम कह सकते हैं। गुरुदेव का हृदय जब भर आता था ना, तब गुरुदेव अपने मन से अपनी मन की बात मुंह से बोल देते थे। बेटा, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं आपसे कैसे कितना दिल से जुड़ा हुआ हूं। आपको मालूम है कि आपके घर में या फिर आपकी गलियों में रहने वाली बिल्ली, जो बिल्ली होती है, वह बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबा के वो एक घर नहीं कितने घर घुमाती है। एक बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में दबा के एक घर नहीं कितने घर घुमाती है, फिर भी वह बच्चा को अपना दांत तक भी नहीं लगने देती है। कितनी अच्छी तरह से वो उठाती है अपने बच्चे को, क्योंकि वो अपना बच्चा है, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, इसलिए उसको एक दांत भी नहीं लगने देती है। वो बिल्ली, वो कुत्ता, कुत्ते को देखा है जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठती है, तब अगर वहीं से कोई आदमी भी गुजर जाएगा तो उसको वो गुरकने लगेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं मेरे बच्चे को न ले जाए। वो उनकी रक्षा करती है। और हमारे गुरुदेव ऐसे ही कहते थे कि बेटा, अगर ये पशुओं में इतना प्यार है अपने बच्चों के प्रति, तो मैं पशु तो नहीं हूं ना, मैं तो आपका हूं। और मेरे हृदय में तो आपके प्रति कितना प्यार है, आपके प्रति कितना भाव है, आपके प्रति मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, ये गुरुदेव के शब्द हैं, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेटा, मैं अवश्य आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, क्योंकि हमारा गुरुदेव भोले बाबा है। हमारा गुरुदेव स्वयं शिव रूप है। इसलिए आज ये हृदय भी कह रहा है, कोई माने या ना माने, लेकिन एक सच्चाई अवश्य आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अंतःकरण इसलिए बोल रहा है, वह सच्चाई आंख ने देखी, कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर
ए बोले शंभू, ए भोलेनाथ की तरह हमारे गुरुदेव प्रेम से महाकाल स्वरूप गुरु सत्ता जेना सानिध्यમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરી અને જેને જીવન દાન કર્યું એવી મહાન વિભૂતિ આજે આપની સમક્ષ છે, જેને ગુરુદેવના ચરણોમાં સમર્પણ કર્યા પછી પોતાની તમામ ઈચ્છાઓને ગુરુ ચરણમાં સમર્પિત કરી દીધી. દીક્ષાનો મતલબ જેને સાર્થક કરી દીધો એવા પરમાદરણીય શ્રદ્ધેય ત્રિપાઠીજી પૂજનીય કહેવાય કે ખૂબ હૃદયથી અમારા ઉપર એમનો સ્નેહ ખરેખર ખૂબ ભાવ વરસતો રહ્યો છે. અમારું કોઈ સૌભાગ્ય ગુરુદેવને તો અમે નથી જોયા, પણ ગુરુદેવ પોતાના બાળકોને મોકલી અને અમારા જેવા નાના નાના બાળકોની ઉપર એમનો પ્રેમ અને સ્નેહ વરસાવે એ અનુભૂતિ અમે જરૂર કરી શકીએ. અહીંયા તો ત્યારે અમારી સાથે કદાચ આવી જાય પ્રોગ્રામ અને આશીર્વાદ મળી જાય, પણ એક સૌભાગ્ય અમારું એ પણ રહ્યું કે વિદેશમાં અમેરિકાની અંદર પણ 2-3 પ્રોગ્રામમાં ગુરુદેવે મોકલી દીધા કે જા બેટા, અમારી નાની નાની દીકરીઓ કામ કરે છે, આશીર્વાદ આપી આવો. અને અમેરિકામાં ટેક્સાસમાં જ્યાં નવું આપણું કેન્દ્ર ભવન નિર્માણ થયું, મંદિર બન્યું આપણું શક્તિપીઠ, એમાં ભાગવત કથાનો કાર્યક્રમ હતો અને પૂજનીય પધાર્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા. ન્યૂજર્સીમાં પણ ગુરુ ગીતા કથા અને સાથે પ્રખર પ્રજ્ઞા સિદ્ધલ શ્રદ્ધાનું સ્થાપન પરમાદરણીય શ્રદ્ધેય ડોક્ટર સાહેબ પણ પધાર્યા, ચિન્મયજી પણ પધાર્યા હતા અને સરસ એ કાર્યક્રમમાં પણ સાથે રહેવાનો એક અવસર મળ્યો. 5 દિવસ યુથ કેમ્પમાં પણ સાથે રહેવાનું એક સૌભાગ્ય મળ્યું. વારંવાર શિવ પોતાના બાળકોની રક્ષા કરાવતા રહે અને પોતે સૂક્ષ્મ રીતે સંરક્ષણ આપતા રહ્યા છે. આવો આજે આવું એક દેવત્વ આપની સામે ઉપસ્થિત છે, ત્યારે તેમના આશીર્વચન આપણે લઈશું અને આપણે બધાય સૌભાગ્યને પામીશું. બોલે યોગાધિપતિ મહાકાલ કી ગાયત્રી મહામંત્ર પુનઃ એક બાર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય
समान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितः वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। व्यासपीठ पर विद्यमान परम आदरणीय सुश्री प्रज्ञापुत्री रश्मिबेन जी, परम श्रद्धेया देव स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति बहनों, देव स्वरूपा आत्मबंधु, प्यारे बच्चों, शिव पुराण की कथा का अमृतपान आप सब कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से मन की व्यथा दूर होती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद में ऋषि कहते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत ममतेन सर्वं तेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। हम सबका मन शिव संकल्पवान हो। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रश्मिबेन के मुख से आपको शिव पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। करुणों में आप सबका चयन कैलाश पर्वत से आदि गुरु शंकराचार्य की आत्मा सहित जब जब शिव तत्व धरती पर अवतरण हुआ है तो आप सबने उनका साथ दिया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। उन्हीं आत्माओं को देव शक्तियां कथा श्रवण करने के लिए भेजती हैं और उन दिव्य आत्माओं को कथा सुनाने के लिए, उनको जन्म लेने के लिए स्वयं भगवान धरती पर भेजते हैं। पहली बार जब मैंने राजपीपला में रश्मिबेन को देखा, महिला मंडल की गोष्ठी चल रही थी, मैं दोपहर विश्राम कर रहा था, तो महिला सम्मेलन था, 108 कुंडी या 51 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला थी। तो मैंने लेटे लेटे में सुनता रहा। बाद में मैं आया, बैठकर भी कथा सुना, देखा तो हमको लगा कि ये तो कई जन्मों की ब्रह्मवादिनी है, तपस्विनी है और बहुत ही चरित्रवान, शीलवान, गुणवान, परम श्रद्धेया शैलजी जी की छोटी बहन के रूप में हमको लगी। तो मैं जीजी के पास गया, इनके कैसेट सीडी लेकर के। उनका जीजी हमको, फिर पादरा में भी रश्मिबेन आई, वहाँ भी 108 कुंड यज्ञ था। बम्बई में भी हम लोग, वहाँ पर 108 कुंड यज्ञ था। और मंजी भाई, मनु भाई पटेल बॉम्बे में, भाईंदर में, समुद्र में 108 बोट पर दीप यज्ञ भी था। तो रश्मिबेन की कथा का 3 दिन सुनने का वहाँ भी सौभाग्य मिला। परम श्रद्धेया जी ने विशेष आशीर्वाद पत्र भेजा था कि बॉम्बे में जो बिहार के, दक्षिण भारत के और हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो हिंदी में बहुत शानदार कथा, प्रज्ञा पुराण की पावन कथा 3 दिनों तक वहाँ भी रही। एटलांटा में भी आपने गायत्री जयंती पिछले वर्ष किया, 1 हफ्ते का न्यूज़ सेंटर में भी किया, जैसा बताया रश्मिबेन ने। तो ये दिव्य आत्माएं भगवान के तप से, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तप से पैदा कराया है। ऐसे मुखारबिंद से आप सभी कथा सुन रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्यों कथा के पीछे जो तप साधना है, जो रश्मिबेन का जो त्याग है, जो तप है, वो प्राण ऊर्जा है, वो आपको आशीर्वचन के रूप में आपके अंतःकरण में प्रवेश करके तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पो उपनिषद, इन्हीं 6 मंत्रों से उपनिषद बना। तो पावन शिव पुराण की कथा इस युग में, क्योंकि महाकाल का तांडव नृत्य चल रहा है, महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञायु होगा। महाकाल का संकल्प है कि जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। तो महाकाल का जो तांडव नृत्य है, तो उसमें शिव पुराण की कथा सुनने से भगवान शिव का नमस्ते रुद्रमन्वय उतो तैश्वे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः, तो उनका जो आशीर्वाद है, जो शिव जी का जो आशीर्वाद है, हिमालय की देव शक्तियों का आशीर्वाद है, वो सब कथा श्रवण करने से आपको 5 दिनों तक मिलेगा। आज मेरी भी इच्छा थी कि एक दिन हम भी कथा श्रवण करें, लेकिन इस समय थोड़ा सा कार्यक्रम विलम्ब हो गया। वहाँ कुछ जो है संगीत प्रवचन का भी क्रम यही समय था, 3 से 5, आने में भी विलम्ब हुआ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं 2 बजे से कथा श्रवण करूं, अमृत पान करूं। खैर हमने कहा आपकी सीडीज में देख लूँगा,
मैंने वहाँ भी टोरंटो में भी जब मैं गया तो सबको वहाँ मधु भाई पटेल को सीडी दिया कि आप घर घर रश्मि बहन की कथा का सीडी सबको सुनाना और बहनों का प्रशिक्षण करना। तो इंग्लैंड में भी दिया मैंने, लोगों को सीडी दिया, यूएस में भी दिया कि इससे अन्य बहनों को प्रेरणा मिले कि शिवम भूतवा, हम भी शिव बनकर शिव की पूजा करें, हम भी अपने अंदर ब्रह्मवादिनी का जो स्वरूप है, ब्रह्म तत्व जो हमारे अंदर भी ब्रह्म तत्व विद्यमान है, हम उस ऊर्जा को जागृत करें। अगला युग नारी युग के रूप में आने वाला है। ब्रह्मवादिनी बहनों को पूरा विश्व का नेतृत्व करना है, क्योंकि भौतिक क्षेत्र में पूरा विश्व विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ता रहेगा, लेकिन यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई तो भौतिक प्रगति सब बेकार होगी। फिर मनुष्य कैसीनो में जाएगा, आत्महत्या करेगा। आप कनाडा और अमेरिका में चले जाइए, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी, सबसे महंगी बिल्डिंग होगी, वो कैसीनो की होगी। तो कथा सुनने वाला व्यक्ति कम से कम कैसीनो में जाकर आत्महत्या तो नहीं करेगा, उसके अंदर का आत्म तत्व जागृत होगा और परमात्म तत्व का जो आत्मानंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। और फिर ओम नमः शिवाय, हम सब शिव के मार्ग पर आगे चलेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे, अभी आगे कार्यक्रम हम सबको जाना है, अभी 2 प्रोग्राम और है। आप सबको खूब खूब मंगल कामनाएं, बहुत बहुत गुरुदेव माता का आशीर्वाद। और हम रश्मि बहन के भी आभारी हैं, आपने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, कथा सुनाया। और हम लोगों का ये है कि सारी धरती पर अब इनकी कथा का विशेष आयोजन ऐसा किया जाए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की भी इच्छा है, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल तक अमृत वचन सब सुने। और बहनों का, जैसे भी बॉम्बे में अभी मेरे पास मनु भाई का फ़ोन आया, 5000 बहनों का मई में कन्या कौशल सत्र परमादरणीय रश्मि बहन के माध्यम से हो रहा है। तो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 2 भाइयों को भेजेंगे, तो यदि हम उस समय तक इंडिया में रहे तो हो सकता है हमको भी सौभाग्य मिले वहाँ सुनने का। लेकिन अप्रैल के बाद से चूँकि हम लोगों की ड्यूटी कहीं न कहीं बाहर हो जाती है, तो इसलिए पूरा विश्व गायत्रीमय होने जा रहा है। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।